Okay, so primary agricultural credit societies, you can share the information regarding this, क्या होती हैं and कौन सी एक्ट के अंडर इनको बनाया जाता है and regulation कौन को regulate करता है. Primary agricultural credit societies, since ये societies है, so we might get confused कि इनको RBI might not be regulating but RBI इनको regulate करता है. So they are operating as प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रास in 18 states. सो कॉमन सर्विस सेंटर्स की तरह भी ये एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज फंक्शन करती है. पार्ट जो मेन फंक्शन है कि क्रेडिट तो प्रोवाइड करते हैं, बट कॉमन सर्विस सेंटर्स और जो बेसिक सर्विसेज है वो भी वो अवेलेबल कराते हैं टू द फार्मर्स एट द लोकल लेवल. So people screen for tuberculosis at Viksit Bharat Sankalp Yatra camps. So tuberculosis. हाँ जी. In this, I would like to add that this PACS, Primary Agricultural Credit Society, it is a village level cooperative credit institution, and it works with rural agricultural borrowers. Okay, you can look for कि कौन सी एक्ट के अंदर ये बनाई जाती है. Okay, Okay, so it is headed by state cooperative banks. Another point. Let's look for the act. ठीक है. Outcomes of COP28 climate summit. So we have seen major areas. Divya, you can repeat. कौन से main areas हैं? Outcomes क्या रहे COP28 summit के? फर्स्ट है कि हमने फर्स्ट टाइम इसमें फेज आउट की बात करी है, फॉसिल फ्यूल की और कोल की कंप्लीटली उनको बैन करना है, उनको यूज नहीं करना है. उसके अलावा क्लाइमेट फंड की बात हुई थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है वो 90s 20s के टाइम पे उन्होंने ज्यादा कार्बन इमिशन की बात हुई है कि उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए उस रिगार्डिंग. ठीक है. So यहाँ पे कुछ areas. Aushik, you can repeat in short points. पहले तो लॉस एंड डैमेज हो गया, फिर उसके बाद फिर फेज डाउन का बात होता है इसमें, और लॉस एंड डैमेज 790 खाली हो चुका है प्लेस अभी तक. लॉन्गर टर्म में जो इंडिया का बात होता है वो है कि ग्लोबल ग्लोबल मीथेन प्लेस साइन तो अभी तक नहीं किया है फॉर एड्रेसिंग इट्स ओन एग्रीकल्चर सिक्योरिटी. ग्लोबल स्टॉक टेक में बोला है सबको कि अपना और बढ़ाइए कंट्रीब्यूशन, तभी जब मीट कर सकते हैं. और पहली बार इसमें फॉसिल फ्यूल को एक जिम्मेवार ठहराया गया फॉर द क्लाइमेट चेंज. तो कैसे मिटिगेट कर सकते हैं लॉन्गर टर्म में, तो इसी बात होती है. और कुछ जो और चैलेंजेस अभी भी हैं जहाँ जिन एरियाज में डिफरेंसेस अभी एग्जिस्ट करते हैं, एक तो ये कि फॉसिल फ्यूल पे जो सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट ऑन द सेम पेज. सेकंड इशू इज इंडिया हैज रिफ्यूज्ड on agreeing on phase out. So we go for we support phasing down because वो gradually possible है. phase out आप suddenly नहीं कर सकते हो. So obviously अगर we support phase out, so that would be having implications on our economic growth also and the developmental process and the momentum also. So ये कुछ areas हैं, and we have also not signed the declaration on reducing greenhouse gases emissions in the healthcare sector because again उसके लिए जो emissions हैं from the gases used for the cooling वो वहाँ से greenhouse gases emissions हो रही हैं, but वो भी impact करेगा जो हमारा healthcare sector के ऊपर infrastructure spending है that is increasing, growth है it is also expanding, and जो हमारी commitments है that would get compromised. So global methane pledge आपने already mention कर दिया, so this is there. And लॉस एंड डैमेज. एक रीजन ये भी है कि ज्यादा जो इंडिया में मिथेन रिलीज होती है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से होती है, तो उसके रिगार्डिंग भी देखना पड़ेगा कि उसको किस तरह से चेंज किया जाए. जैसे बोलते हैं कि जो राइस होता है उनके रिगार्डिंग सबसे ज्यादा मिथेन इमिशन होता है, तो उस चीज को किस तरह से कन्वर्ट किया जाए. डाइवर्सिफिकेशन अभी उस फेज में है इंडिया, वो पूरी तरह से नहीं हुआ है. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो उस रिगार्डिंग. ठीक है. हाँ, यहाँ पे मेंशन भी है. सो मिथेन इज 28 टाइम्स मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट इज व्हाई इट इज मोर डेंजरस. एंड वो एटमॉस्फेयर में शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए सस्टेन करती है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. सो वी कैन टेक अप दीज क्वेश्चंस. सो कल के पहले आंसर्स देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किए. तो ऑपरेशन चिंगिस खान देख लिया था, मुक्ति बाहिनी वाज करेक्ट. एंटी शिप मिसाइल्स नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं. एंड आईएनएस
Turkey was the answer. Sheikh Mujibur Rahman. Pakistani instrument of surrender was signed, वो जो picture थी was signed by India's Jagjit Singh Arora and Pakistan's AAK Niazi. ठीक है. So we can go with these questions. Karuna, you can answer them. You can read and answer. The screen is not that clear for me. Okay, is it now? I zoomed it more so that you can see. I think it is a fault on my part. Okay, I will I'll read. I'll read and you try to answer. Question was one is that in the northern hemisphere, the winter solstice is the moment when the Earth's, then there is a dash, fill in the blank, is pointed the farthest away from the sun. So I'll repeat, in the northern hemisphere, the winter solstice is the moment when the Earth's dash is pointed the farthest away from the sun. So which pole is pointed farthest? यहाँ पे ये पूछ रही है. I think जो नॉर्दर्न साइड होती है वो पॉइंटेड होती है. यहाँ पे मतलब आई थिंक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी हो सकता है आंसर में. मतलब आप सोच के बता दो. Then question 2 is if you observe the sun in the sky every day at the same mean solar time, its locations will appear to trace a figure 8 path. The sun will attain its highest point in this pattern on the day of the summer solstice and its lowest point on the day of the winter solstice. What is this figure 8 diagram called? So okay, थोड़ा ज़्यादा है detail. If you know, you I can. think फर्स्ट में तो यही होता है कि जो नॉर्दर्न पोल होता है वो टिल्टेड होता है सन की तरफ. हाँ तो ये farthest away पूछ रहे हैं तो southern pole is farthest away from the sun during the winter solstice. Southern pole farthest away होगा ना फिर. अगर अगर सदर्न पोल फारदेस्ट होएगा तो वहां पे तो फिर ज्यादा ठंड होगी ना, इसमें बोल रहा है विंटर सोलिस्टिस. हाँ तो नॉर्थ होगा. ठीक है. Northern pole जो northern hemisphere that is bended towards or tilted towards the sun during winter solstice. So आप summer solstice के बारे में बता दो करो ना. तो समर सॉलिस्टिस में यही होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें उस टाइम पे जो समर का सीजन होता है वो चल रहा होता है एंड जो अर्थ का एक्सिस होता है उसके टिल्ट की वजह से जो लेंथ ऑफ डेज एंड लेंथ ऑफ नाइट्स होते हैं वो वेरी करता है. एंड अगर इसकी बात करें तो जून वाला जो मंथ होता है एग्जैक्टली मुझे पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. So question 3 is given its location, the continent of Antarctica experiences 6 months of darkness during its winter on the date of its winter solstice, also called the midwinter, because it falls at the middle of this dark period. People on the continent, including the research stations there, celebrate midwinter day. What is the date? Oh, तो यहाँ पे exact date पूछा है. So you can look for this. Question 4 is name the festival celebrated across India in January that coincides roughly with the sun completing its winter solstice and moving from the direction of constellation Sagittarius to that of Capricorn. So which festival is celebrated in India? लोहड़ी हो सकता है. I मकर think. संक्रांति हो सकता है. हाँ, मकर संक्रांति हो सकता है. 14 Okay. जनवरी. Okay, you can continue with question 5. X is a monument in County Meath, Ireland, built around 3200 BC. It's a famous example of astronomy, which is a study of how pre-modern societies studied astronomy and made astronomical observations. So this is so because light from sunrise enters the inner chamber of X only on the day of the winter solstice. So ये X है क्या? एक ये monument है. तो what is X? आयरलैंड में लोकेटेड है. सो इस पिक्चर की अगर हम बात करें, ग्रेविटी कॉजेज द ओरिएंटेशन और द टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन जो रेड कलर में अपॉइंटेड है टू स्लोली चेंज ओवर टाइम. सो ग्रेविटी की वजह से दिस हैपेंस. ओरिएंटेशन कंप्लीट्स अ फुल सर्कल, वाइट में जो एरोज डिनोट कर रही है, once every 26,000 years. So this is why the dates of the Earth's solstices fall later over time. Name this phenomenon called. Karuna? I am not aware about this. Okay.
So we'll discuss with answers tomorrow then. So Ministry signs deal for 6 offshore patrol vessels. So Maxgaon dockyard shipbuilders एक important है indigenous manufacturers का India में. So offshore patrol vessels are for the Coast Guard. So this is important for the coastal security, specifically when we say after 26/11, the terrorists entered into India via the sea route. So Coast Guard के patrol vessels have been provided. So Telecom Bill has been passed to replace 138-year-old Telegraph Act. So under the Telegraph Act, we could do the phone tapping also. So that was legal, but again, under the restricted conditions. This was not so easy to be done under even the act also. So the bill seeks to reform and simplify the regulatory and licensing regime for the telecommunications. So this is ease of doing business, promote हो रहा है and remove the bottlenecks and creating telecom infrastructure. So more capital expenditure. So that's how we can say कि more improvements and developments would be visible in future in the telecom sector. It also allows the government to temporarily take control of the telecom services in the interest of national security and provide a non-auction route for the allocation of the satellite spectrum. So satellite spectrum के लिए we've been discussing this thing, but ये एक important area है कि government can also take control during national security. So ये important area. So GST regime की वजह से we can say कि tax rate have been more rationalized, but एक और demand अब जो है जो number of tax slabs हैं उसका number reduce होना चाहिए. मतलब right now we have the 5 tax slabs, तो या तो 1 होनी चाहिए या 3 tax slabs होनी चाहिए. तो ये अब ज़्यादा demand की जाती है as a part of GST reforms. मानसी 4 टैक्स स्लैब है 5 क्योंकि एक 5 18 और 28 4 ही तो है 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. 0 भी काउंट करते हैं. ओके कुछ एरियाज में 0 भी है. 0 कहाँ पे एग्जाम्पल्स? ऐसे पब्लिक गुड्स हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता है. लाइक न्यूज़पेपर. पैकेट फूड के अलावा होगा 0 आई थिंक. न्यूज़पेपर. मतलब पैकेट फूड हाँ, पैकेट फूड के अलावा मतलब के अलावा, मतलब कि जो अगर डायरेक्टली अगर चीनी मिल रहा है पॉलीथीन में या फिर तो उसमें शायद 0 लगता है देखना पड़ेगा. ऐसा लाइक कुछ. न्यूज़पेपर है उस पे नहीं लगता है, उस पे 0% होता है मेरे हिसाब से. और एक दो एरियाज और है जहाँ पे 0% है. सो यू कैन सर्च एंड शेयर द डिटेल्स इन द ग्रुप. So avoid clustering and social distancing again. The rising cases of COVID. 87 Kukizo victims of Manipur ethnic violence laid to rest. So Indigenous Tribal Leaders Forum, an important body. And Kukizo is the tribal people that we get in the state of Manipur. So they have been laid to rest 7 months after they died in the long drawn ethnic conflict. So this was the mass burial that took place. Capital is Imphal. So साहित्य अकेडमी क्या है औशिक? साहित्य अकेडमी अवार्ड्स announces awards. साहित्य एकेडमी वही प्रमोट करने के लिए साहित्य. तो साहित्य एकेडमी इंडिया में आई थिंक हिंदी साहित्य बाकी सब प्रमोट करने होगा. So Tamil author Rajseekaran, Devi Bharti, Telugu writers, these are the names. These are those named for the Sahitya Academy Awards for 2023. लिटरेचर के लिए ये नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स लिटरेचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में अवार्ड दिया जाता है, फेलोशिप भी दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है. So Hindi writer में we have seen कि यहाँ पे
नोवेल मुझे पहचानो, दिस हैज बीन सिलेक्टेड। इंग्लिश कैटेगरी में वी हैव नीलम सरन गौर फॉर हर नोवेल, दिस इज द रेक्विएम इन रागा झांकी जानकी। So Academy was founded in 1954. ये एक autonomous body है under the Union Culture Ministry, dedicated to promotion of literature in Indian languages. But यहाँ पे English को भी दिया जाता है, so that's there. और यहाँ पे we can look for कि कौन सी language में नहीं दिया जाता है, so that would be more useful for us. So Dogri is there, Gujarati है. I think 8th schedule में जो languages हैं वो तो part होंगी इसका. Business page पे Also, हाँ जी. in the zero tax labs का जो बताया था आपने category, in that milk, dairy products like fresh fruits, etc. These are included, curd वगैरह, and also the supplies meant for special economic zones and overseas. ओके, ठीक है, थैंक यू। डिसइंफ्लेशन में पे वे फॉर इंटरेस्ट रेट कट, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। व्हाट इज डिसइंफ्लेशन, दिव्या? करुणा? डिसइंफ्लेशन कि 3 मतलब इन्फ्लेशन का रेट कम हो गया। नहीं, इन्फ्लेशन और उल्टा है। डिसइंफ्लेशन ऑपोजिट हो गया वर्ड्स, और हाँ डिफ्लेशन एक काम होता है। Disinflation, बोलो। disinflation मतलब कि स्लोअर रेट पे इन्फ्लेशन, मतलब हो रहा है बस स्लोअर रेट पे, एंड डी इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन नहीं हो रहा। नहीं नहीं, आपने उल्टा बोला है। आप इसको ऐसे समझ के चलो, इन्फ्लेशन का ऑपोजिट क्या होगा? डिसइन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, डिसइन्फ्लेशन में प्राइसेस फॉल हो रहे हैं, इन्फ्लेशन नहीं हो रहा, बट उस केस में वो एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया इन्फ्लेशन का। और इन डी डिफ्लेशन इन्फ्लेशन स्लोअर रेट। हाँ, उसमें इन्फ्लेशन हो रहा है बट वो स्मॉलर रेट पे हो रहा है कंपेयर टू बिफोर। ठीक है, ओके तो इसको ओके। ऐसे लेके चलना, इन्फ्लेशन वर्सेस डिसइन्फ्लेशन, इसका ऑपोजिट हो गया टर्म में। सो हेयर, मानसी, लेकिन डिसइन्फ्लेशन में नेगेटिव होगा, हाँ नेगेटिव होगा, वो तभी पॉजिटिव होगा। डिसइंफ्लेशन। नहीं, वो डिफ्लेशन डिसइन्फ्लेशन पॉजिटिव, डिसइंफ्लेशन में नेगेटिव होगा, डिफ्लेशन में पॉजिटिव होगा, क्योंकि मानसी, डी डिफ्लेशन उल्टा है, मतलब नेगेटिव होता है डिफ्लेशन में, क्योंकि डिफ्लेट कर रहे हैं ना। तो मैं ऐसे याद किया था कि डिफ्लेट होता है तो तब कम हो रहा है। आपने चेक किया? डिसइन्फ्लेशन मतलब कि डिस इन्फ्लेशन के अंदर में डिस डिस है, तो इन्फ्लेशन तो होगा इसके अंदर में, लेकिन थोड़ा रहेगा, टेम्पररी स्लो डाउन यस रहेगा तरह से। यस मानसी जी, मतलब स्लोइंग इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा सा, हाँ देख हाँ, ले एक बार। ठीक है। और एक और पॉइंट है, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, कि इन्फ्लेशन हम बोलते हैं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड गुड फॉर द इकोनॉमी, तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि इन्फ्लेशन जीरो भी या नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है उस टाइम पे, क्योंकि इन्फ्लेशन होती है नहीं नहीं, 4-5%। ठीक है, आपने बोला आसपास आए हो आप, बट एग्जैक्ट इसमें ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए इन्फ्लेशन अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जितनी ज्यादा होगी उनके लिए वो उतना बेनिफिशियल है, क्योंकि जो प्राइस होगा, जो भी गुड वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो हायर प्राइस पे सेल होगा इकोनॉमी में, मार्केट में। तो इट सपोर्ट्स मोर प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो इसलिए बोलते हैं एक सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड टू बी गुड, तो इसलिए हम बोलते हैं आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट भी 4% है। सो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के लिए रिफॉर्म्स की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक सेट्स अप द टास्क फोर्स ऑन दिस। सो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, सो एक बैंक या एक इंस्टीट्यूशन की हेजेमनी नहीं होगी, एंड मल्टीलेटरली दे वुड बी केटरिंग टू द यू नो the borrowing needs of the countries, और जो projects development specifically in the developing countries, तो वहाँ पे एक तो domination नहीं होगा of the developed countries like we see in case of WTO, जैसे US tries to dominate. So China's strong Russia ties are a strategic choice.
सो ये भी एक कंसर्न एरिया है कि वी आर सीइंग इवन आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर कि रशिया और चाइना के टाइज और स्ट्रॉन्ग हुए हैं. So this is one major stronger front we can say which is emerging, and India के लिए since we share good ties we say कि Russia और India all weather friend है. So I don't think so कि इतना इंडिया के लिए चैलेंजिंग होना चाहिए. ये पार्टनरशिप एंटी इंडिया हो सकती है, बट यहाँ पे इंडिया के लिए ओवरऑल चैलेंज ये कि वी हैव टू बैलेंस आवर टाइज विद यूएस आल्सो एंड बैलेंसिंग आवर टाइज विद रशिया आल्सो. तो वो एक इम्पॉर्टेंट बैलेंसिंग एक्ट है which India needs to adhere to, and that we have been doing also. Iron press, two important ingredients to this wonder. It has heavy metal base, often alloy of iron होता है, and it heats up. So now have you ever wondered why our clothes are straightened when ironed? ठीक है, तो simple logic है. The heat has to be such that they only move the atoms around, not so much कि they break the molecular bonds. Otherwise, this is how you may end up with a burnt hole in your dress. तो simple logic है. इतना ही इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, इतनी हीट होनी चाहिए कि एटम्स मूव कर सके. अगर वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ब्रेक होंगी तो इट वुड एंड अप इन बर्निंग योर क्लोथ्स. सो पॉलीमर फिजिक्स इसके पीछे हैं. इफ यू जस्ट प्लेस अ हैवी वेट ऑन द क्लोथ एंड ट्राई स्ट्रेटनिंग इट विल नॉट वर्क. So why is heat required to achieve the ironing? It is nothing but जो energy है, it causes all the atoms and molecules to vibrate a bit, and that does the trick of straightening the clothes. So it's a simple logic. Volcano in Iceland erupts after being preceded by thousands of earthquakes. So that was a signal towards volcanic eruption also, and we have discussed in detail the location of Iceland. Okay, so यहाँ पे भी we have a science quiz. Which country got to name this year's first major cyclone in Indian Ocean, Mocha, that made landfall by crossing the Myanmar coast? ये देखना पड़ेगा. Then intense tropical storms with wind speeds exceeding 119 km per hour are known as cyclones when they form over the South Pacific and Indian Oceans. What are such storms that develop in Northwest Pacific called? So North हरिकेन. hurricanes बोलते हैं. ठीक है. हरिकेन टाइफून होगा. नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक है ना, टाइफून हो गए. ठीक है. और हरिकेन्स कहाँ होते हैं फिर? हरिकेन अटलांटिक हो गया. अटलांटिक से जो ठीक है. डायरेक्टली गल्फ ऑफ फ्लोरिडा जो है उसमें आता हरिकेन होता है. ओके. क्वेश्चन 3 फॉलोइंग फ्रॉम क्वेश्चन 2 सिमिलर स्टॉर्म्स इन नॉर्थ अटलांटिक आपने बता दिए. They are derived from an indigenous word that signifies evil spirits and weather gods, and which European explorers sailing in the Caribbean had heard. Question 4. What is the name of the scale that meteorologists use to categorize the major storms in the Western Hemisphere based on the intensity of their sustained wind speeds? So, कौन सा meteorological scale use किया जाता है? This has to be looked into. Question 5. Tropical storms, including cyclones, distinctly feature. स्टैफर सिम्पसन स्केल सर्च कर लिए इसको. ठीक है. स्टैफर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल है 1 to 5 के. Okay. So, tropical storms, including cyclones, distinctly feature air currents that spin around a relatively more calm, low-pressure area at the center known as I बोलते हैं इसको. मेरे हिसाब से यहाँ पे low pressure हाँ area हाँ. center known as the I. So in this picture we can see कि this is the low pressure system over Iceland. So एक ये प्री कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स. तो और क्या प्री कंडीशंस हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए? Rotation of the air and storm around the center. So this you can see it goes in the anti-clockwise manner. So see प्री me. कंडीशन ये आ जाता है कि 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 700 मीटर की हाइट पे ज्यादा होनी चाहिए, एंड लो प्रेशर एरिया तो होना ही चाहिए. ठीक है. So northern hemisphere में it is anti-clockwise, southern hemisphere में it is southern में it is clockwise. And cyclone and anti-cyclone होता है. So anti-cyclone में exactly opposite तरीके से movement होती है जैसे cyclones में देखी जाती है.
Okay, coming to Indian Express newspaper. Hamas leader visits Egypt amid the intense efforts for the Gaza ceasefire. So हमने बात कर ली what should be the role of Egypt. India-Egypt relation बात कर चुके हैं and EU agrees on new rules for hosting the migrants, seeks to reduce the numbers. Critics worry about the rights abuses. So यही है कि immigration policy जो है that has been tightened by several countries. Migrants को या refugees को host नहीं किया जाता है. But at the same time, this also leads to ignorance or violation of their human rights also. इसमें मैं ये भी बोलूँगा कि कभी कभी फोर्स माइग्रेशन भी होता है, ज़बरदस्ती का माइग्रेशन किया जाता है फॉर द असाइलम एप्लीकेंट। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में देखा गया है कि फेक कार्ड बनाया जाता है कि जो भी खालिस्तानी सपोर्टर होते हैं फेक कार्ड बनाते हैं कि अ, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला, गवर्नमेंट मेरे ऊपर उत्पीड़न कर रहा है, तो फिर उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, असाइलम सर्टिफिकेट कनाडा में। प्रवेश, इसके बारे में पता है? आई थिंक इज नॉट देयर। Okay. तो इसी कारण की इशू भी है माइग्रेशन में। हम्म। जरूरी नहीं कि हर मतलब सही हो माइग्रेशन। तो इस पे कोई स्पेसिफिक कन्वेंशन भी है यूएन कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स के ऊपर हाँ, यूएन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन ऑफ माइग्रेशन रेफ्यूजीज वाला तो है ही, जो इंडिया साइन नहीं किया 1951। साइन किया शायद, रेटिफाई नहीं किया। वो रैटिफाई एक नहीं चीज नहीं की, किया। रेटिफाई नहीं की। नीचे ले सकते हैं कि टॉक्स टू अवॉइड यूएस। कौन सा कन्वेंशन? यूएन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड यूएन कन्वेंशन ऑन जो रिफ्यूजीज कन्वेंशन है 1951। टू इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशन रिलेटेड टू स्टार्ट रिफ्यूजी 1951, रिफ्यूजी कन्वेंशन जेनेवा कन्वेंशन को बोलते हैं 1951। ओके, रिफ्यूजी कन्वेंशन को जेनेवा कन्वेंशन बोलते हैं। जेनेवा कन्वेंशन बहुत टाइप का जेनेवा कन्वेंशन है। ये जो जेनेवा में हुआ साइन होगा इसलिए जेनेवा कन्वेंशन बोलते होंगे। बोलते हैं। ठीक है, आप कौन सा आर्टिकल बोल रहे थे आशिक? ये दिस ऊपर वाला यूएस वीटो डिले, यूएनएससी, इसलिए डिले हो रहा है ना, यूएनएससी वीटो बार बार यूज नहीं हो पा रहा है। देयर इज अ 2.3 मिलियन पीपल हैव, उनको सपोर्ट करना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन में, वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो दिखाता है कि जो रेजोल्यूशन है यूएन में, यूएनएससी में, वो एक ग्राउंड पे एक वर्क नहीं करता है एक अच्छे तरीके इफेक्टिव तरीके से। तो देर इज सम अमाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म चाहिए, वो बात कर रहे हैं कि बिग कंट्रीज में। So Sri Lanka bans the foreign research ships amid Chinese request. So ये concern है, Sri Lanka has decided to impose 1-year moratorium in allowing the foreign vessels to conduct research in the island nation's territorial waters. So we are seeing कि इसके वजह से Chinese surveillance ships जो हैं, they are increasing more in numbers. Chinese surveillance, its assertiveness, its control basically you can say is increasing. And Indian Ocean region में this is what China has been trying to do under the string of pearls theory. So China's ballistic missile, satellite tracking ships, they are being deployed, arrived in Hambantota port. So there are apprehensions about the possibility of the vessel's tracking systems trying to snoop on the Indian defense installations. ये सबसे बड़ा concern है. For the first time, Prime Minister Narendra Modi ji have talked regarding the US allegation and Canadian allegation. So, alleged plot and against Pannu, who is an Khalistani separatist, Gurpatwant Singh Pannu. तो पीएम मोदी जी कहे कि if someone gives us in any information, we would definitely look into it. If a citizen of ours had done anything bad or good or bad, we are ready to look into it. Our commitment is to the rule of law. Diplomatic answer. तो ये कि proof दिया जाएगा तो we'll be going into investigation. And in a big artificial intelligence push, center to step up computing capacity, offer free services to the startups.
So given AI is being seen as a crucial economic driver in the years to come, governments plan to substantially beef up the country's computing capacity. So to expedite such additions, government plans to invite the private sector also by offering incentives. So role of private sector becomes important, and here we can say the skilling also becomes important, the computing technology, and role of certain is important when we talk about the cyber attacks. Certain is the Computer Emergency Response Team of India, and compute as a service to India's startups. So free services भी provide की जाएगी, which would be again promoting innovations, innovative industry in the startup sector. So sovereign AI mission to develop its own sovereign AI. This has been launched by India. So यहाँ पे भी हम indigenization पे focus कर रहे हैं, because we see कि artificial intelligence can also be ethically misused, unethically misused. So we say कि artificial intelligence को completely ban नहीं कर सकते, so regulation becomes important, and how much we'll be using it in a particular thing, in particular application. You can see bank frauds. South Indian Bank alleges Noida staffer siphoned of rupees 28 crores. So we've talked about the digital loan apps also वो भी एक concern है, and यहाँ पे internal vigilance department received an email stating that certain persons associated with one of the customers are threatening him to do certain illegal transactions, and he is facing threats to his life. So इसको एक case study की तरह ले सकते हैं हम कि एम्प्लॉय को थ्रेट्स मिल रही थी टू कैरी आउट these certain kinds of illegal transactions, and his life was also at threat. So he made a prayer for the registration of the crime against a firm while alleging its directors are involved in the hawala transactions. So bank also received a complaint from the firm which said the accused had fraudulently and unauthorizedly withdrawn rupees 28 crores from the account of the company without the knowledge or authority of the directors of the company. So it is now revealed that the accused had done various unauthorized fraudulent transactions किए गए, either for the benefit of himself, and so the suspect has already left the country. Therefore, immediate action in coordination with the passport immigration authorities is required. तो यहाँ पे कौन सी act important हो जाती है, औशिक? Which is one act here? पीएमएल हो जाए क्या? नहीं, PMLA नहीं, वो तो होगा मनी लॉन्ड्रिंग और ये एक्विजिशंस हवाला ट्रांजैक्शंस बोलोगे, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, because he has left the country. So glasses for visually impaired stun device. Students showcase their products at Expo. Ultrasonic obstacles detection glasses that can help the visually impaired, security systems for the homes, and a self-defense device that can stun an attacker. These were among the products that were developed by the Delhi government schools under the business blasters. So we are seeing ki even government schools में such initiatives, how they can actually give us such wonderful products. Ultrasonic obstacles, like जो हैं examples भी दिए गए हैं. Entrepreneurship mindset curriculum in Delhi government schools is being promoted. तो एक important keyword है entrepreneurship mindset. Would be promoting more innovation. जो हम बात करते हैं promoting innovative ideas, startups, bright future. ये advertisement हम discuss कर चुके हैं in detail.
ये सो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं जो न्यू बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं. सो इट इज बीइंग सेड कि दे आर सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लॉज आर बीइंग मेड अकॉर्डिंग टू स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो औशिक, व्हाट वुड यू से ऑन दिस फ्रेज स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है? स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं. जो भी चीज़ प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. सेकुलरिज्म हो गया, फेडरलिज्म हो गया, लिबर्टी हो गया, और स्पिरिट इक्वालिटी हो गया, में हम ये बोल फ्रेटर्निटी. सकते हैं कि हाँ, it is a living document, so it can be लिविंग modified or डॉक्यूमेंट. amended also. Spirit of Indian Constitution is due justice, due process of law. We can say it promotes federalism, separation of powers. So ये main areas हो जाएंगे apart from जो आपने highlight करे. और कोई important area? We have Pravesh. Yes, Pravesh. Spirit of our constitution. Apart from these ideas, if you want to highlight any a unique point. आपने क्या बोला माफ मैंने समझ नहीं. से अब रिपीट कर दिया. अब तो लाइक माइंड में चलो लाइक छोड़ो. बेसिक स्ट्रक्चर बोला है. या अब ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं आएगा. जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल ले चुके. कुछ आसानी होगा एक तरह से केस जजमेंट देने में. और स्पेक्ट्रम एलोकेशन प्रोविजन जो टेलीकम्युनिकेशन बिल है वो भी डिटेल में लिखे थे. लिखा हुआ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर डिस्टिंक्ट गोल नीड यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड फर्स्ट. चाइल्ड कौन है? हाँ, पहले तो यार डेफिनेशन होनी चाहिए. 52nd रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल्स एंड स्किल डेवलपमेंट कमिटी. So they found ambiguity in the definition of the child under various legislations. मतलब एक standard definition नहीं है. कहीं पे it is between like below 18 years of age, we consider a person to be a child. कहीं पे it is 16 years. So यहाँ पे examples भी like Child and Adolescent Labor Prohibition Regulation Act 1986. It is a cognizable offense under this act, whereas Juvenile Justice Care and Protection of the Children Act 2015, it is a non-cognizable offense. So Pravesh, what are these cognizable and non-cognizable offenses? The difference between them? कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज हैं उनको उनकी नज़र में आपने कोई ऐसा काम किया जो प्रूव कर देता है आपके काम को देख कर ही कि आपने जो है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है. दिख गया है कि आपने चढ़ा दी. एक ये है कि आपके ड्राइवर ने गाड़ी चलाई और आप पीछे बैठे हुए थे तो उसके ऊपर तो लगेगा कॉग्निजेबल, आपके ऊपर लगेगा नॉन कॉग्निजेबल. यानी आपकी गलती नहीं है लेकिन ऑफेंस आपने तब भी कर दिया. ये फर्क होता तो है. इससे प्रवेश बेल का प्रोविजन किसके लिए स्ट्रिंजेंट है? कॉग्निज का भी स्ट्रिंजेंट होगा ना बेल का नहीं, प्रोविजन. obvious सी बात है. हाँ ठीक है. इसमें हम टर्म बोल सकते हैं अरेस्टिंग इंडिविजुअल विदाउट अ वारंट. जैसे प्रवेश भाई ने बोला ना कि केपेबल ऑफ बीइंग नोन, मतलब कि बहुत ही बेसिक है कि है हुआ है क्राइम, तो उस बेसिस पे. Yes. So watch your words. Election Commission is learned to be working on guidelines on referring to persons with physical and mental disabilities. Guidelines are meant for the parties and leaders, advising them on terms they should avoid in their speeches. So minutely इस पे work किया जा रहा है by Election Commission of India कि जो physically and mentally disabled people हैं आप उनको किन terms से actually address कर सकते हो. सो ये भी इम्पोर्टेंट इसीलिए जो इम्पैक्ट ओवरऑल सोसाइटी पे छोड़ेगा और नॉट जस्ट ऑन द स्पेशली एबल्ड पीपल बट ऑन एंटायर सोसाइटी. आप कैसे उनको देखते हो, किस नज़र से देखते हो. और पॉलिटिकल